हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब देख रहे हो भाई तब है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जो हमारा सेशन होने वाला है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपको बता दिया है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा और कोई भी इंसान मोशन में कब होगा। आज जो हमारा एम है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये हमको जानना है, हमारा एम ये है। उससे पहले उससे पहले मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। जैसे अगर मान लो ये 5 है, यहाँ पे 4 है, तो आई विल से कि दैट पर्सन इज स्टैंडिंग एट 5,4 और एक लाइन रिप्रेजेंट करूंगा मैं इस लाइन से, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5,4। ठीक है। अब मान लो कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा है, -2, -3 पे कोई इंसान खड़ा है, तो ही विल बी स्टैंडिंग समवेयर हियर, राइट? सो दैट पर्सन विल बी समवेयर हियर। ये होगा उसका पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज दिस। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2? -2, -3। मतलब आप एक चीज देखो कि हम इंसान की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x, y से। पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, कौन से पॉइंट पे है, फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, है ना? तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग। सपोज आई एम आस्किंग यू समथिंग। दिस इज माई होम, ठीक है, एंड दिस इज द स्कूल। ये स्कूल है, ये घर है। होम, स्कूल। So there is a boy, let us call it boy. There is a boy who wants to go to his school and he has 3 paths. One path is this path, ठीक है. Another path is this one. He'll first come to a candy shop. Let me tell it. This is a candy shop where he'll buy some chocolates, candies for himself. Then he'll go to his friend's house. And then from there he goes to his school, right? So let me call it as path 1 and let me call it as path 2. So अगर उस बच्चे को सिर्फ सीधे स्कूल जाना है तो which path do you think he should take? The shorter one, right? And which one is the shorter one? The shorter one is path 1. This path is the shorter one, isn't it? ये पाथ सबसे छोटा है, तो अगर उस बच्चे को सीधे स्कूल जाना है तो वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और अगर मस्ती करने में जाना है तो ये जाएगा, है ना? तो now see, if let me I'll give some values to this. I'm calling it as 50 meters. This I'm calling it as 10 meters. This I'll call as at 60 meters. This I'll call as 11 meters. So now tell me one thing. जब वो बच्चा, when that boy is going by path 1, जब वो path 1 से जा रहा है तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है in order to reach to his school, obviously from home. तो I'll say he covers only 50 meters as he travels by this path. जब वो सिर्फ इस पाथ से जा रहा है तो वो 50 मीटर कवर कर रहा है ना। लेकिन जब वो इंसान, वो बच्चा पहले यहाँ जाता है, कैंडी शॉप पे जा रहा है, वहां से चॉकलेट्स खरीद रहा है, फिर अपने दोस्त के घर जाता है,
फिर वहां से वो स्कूल जाता है. Then he travels while going via path 2. He travels 10 meters plus 60 meters plus 11 meters. That is how much? 60, 70, 80, 81 meters. Which one is shorter? Obviously 50 meter is less than 81 meter. So which one is the shortest path out of the two? Path 1 is the shortest path. Now see, I'm defining a term called as distance. Distance is the total path traveled by an object in order to go from one point to another. Now suppose that fellow is standing at point A and he wants to go to point B, and he takes this route. He goes via this part which is 25 meters long, and then he comes by this part which is 20 meters long. Now tell me one thing, what is the distance traveled by him in order to go from A to B? That is nothing but 25 meters, है ना, क्योंकि वो इस पाथ से जाता है यहाँ पे. What is the distance traveled by him in order to go from B to A? जब B से A पे जा रहा है तो इस पाथ से आ रहा है, that is nothing but 20 meters. Now tell me what is the distance traveled by him in order to go from A to B and then come back to A. So I'll divide it as distance traveled from going to A to B plus distance traveled from going to B to A, isn't it? So this will be nothing but 25 meters plus 20 meters. That will be equal to how much? 45 meters. This is the distance. Now let us see another problem. The same, let us not call it problem. There is again 2 points A, B. This path is again 25 meters long. This path is 20 meters long. There is another path which is 50 meters long. Okay. Person 1 goes by path 1, goes by this path. Person 2 goes by this path, and person 3 goes by this path, है ना? Now आराम से क्वेश्चन सुनना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन 1, सारे डिस्टेंस मैं ए से बी के बीच के लिए निकाल रहा हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ए टू बी जाने में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कवर कर रहा है वो इंसान. तो डिस्टेंस फॉर पर्सन 1 25 meters, for person 2 20 meters, for person 3 50 meters, isn't it? Out of all the three, this one is the shortest distance. है ना? अब मैं एक नया टर्म डिफाइन कर रहा हूं which is called as displacement. Displacement is the shortest distance. Shortest distance, सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, shortest distance between 2 points. Between 2 points. Now tell me, if I have 2 points A and B over here, there are many ways to go from A to B, right? है ना? बहुत सारे तरीके हैं ए से बी जाने में, और सारे तरीकों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है अलग होगा. इसमें हो सकता है 25 मीटर्स हो, इसमें 20 मीटर हो, इसमें 100 मीटर्स हो, इसमें 150 meters हो. But the shortest path will always be this. The shortest path will always be the straight line between 2 points. So
the displacement will always be 20 meters. Displacement in going from A to B is 20 meters. However, distances may be different. Distance may be different. That depends on the path taken. है ना? आई होप आई एम मेकिंग सेंस. अगर कोई इंसान इस पाथ से जा रहा है तो वो 25 मीटर ट्रैवल करेगा. अगर कोई इंसान इस वाले पाथ से जा रहा है तो वो 150 मीटर्स 100 मीटर्स ट्रैवल करेगा. अगर कोई इंसान इस वाले पाथ से जा रहा है तो वो 150 मीटर्स ट्रैवल करेगा, है ना? नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a boy starts from his home, goes to his school. ठीक है? Which is 100 meters apart. Both are how many meters apart? 100 meters. And then again, after finishing his classes, come back to his home. ठीक है? The question says find the total distance traveled. By the boy while going from home to school and then coming back to home. The same question says find the total displacement traveled by the boy while going from home to school then again coming back to home. ठीक है? And now let us see if that boy starts from home and goes to his school. Home, school covers 100 meters. Then again comes back to home. Again covers 100 meters. So total distance will be how much? Total distance will be distance from home to school plus distance from school to home. That will be 100 meters plus 100 meters. That is equal to 200 meters. Right? Now let us see the second part. This is the solution for the first part. Now let us see the second part. The boy starts from his home, goes to his school, comes back to his home again. So I need to find the displacement by the boy. Initial position क्या है उस बच्चे की? Home. Final position क्या है उस बच्चे की? Home. So मुझे home से home के बीच की shortest distance find करनी है ना? What will be the shortest distance from home to again home? This seems a mindless question. दो एक ही पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? That will be 0, है ना? See again, see this fellow starts from here, goes to school, then comes back. He was here only, come back here only. So the shortest distance between these 2 points is 0 only. There is no distance at all. So the displacement in that case will be 0, है ना? Now let us take a homework for us. See, the boy starts from point A, goes to point B, takes his friend from here and then goes to school. स्कूल है, ये घर है उस बच्चे का, यहाँ उसका दोस्त रहता है. ठीक है? ये 4 मीटर्स है, ये 5 मीटर्स, सॉरी ये 3 मीटर्स है. ठीक है? The boy goes from his घर, starts from his घर, goes to point B where he picks up his friend and then they both goes to क्या गंदी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, they both go to school. ठीक है? So what do I have to find? I have to find total distance traveled by
total distance traveled by this boy. Let us call this boy as Ram, by Ram. Second is displacement covered. Displacement covered थोड़ी लिखेंगे. Displacement of Ram. ठीक है, ये दो चीजें हैं. ये आप बताओ. इसमें थोड़ी मैथ्स भी यूज होगी. आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा. ठीक है, जिनको नहीं आता है पाइथागोरस थ्योरम, आई विल टेल यू. दिस इज बेस, this is perpendicular, this is hypotenuse. So base का square plus perpendicular का square is equal to hypotenuse का square. This is Pythagoras theorem. Comment down your answers, है ना. चलो, all the best, take care.